morning, Dr. Grewal. Good morning. How are you? All fine. Dr. Grewal, good morning. Sir, all the speakers have logged in. Okay. So we'll start as per the program, sir, in say 5 minutes. Hello. Yeah. So we can start at 10:30, sir, Okay. because it will be also live telecast in other social media platforms. So will you tell me when we are live or? Yes, sir, sure. हाँ मैंने हुन 12:30 तक कॉल ना करी Morning, everybody. I hope you can hear me. Well, yeah. Welcome, Alex. Welcome to this seminar, and thanks for joining. Well, thank you. It's a great honor. Thank you very much for inviting us. Good morning, Alex. Good morning. David. Yeah. And I hope you have a copy of my presentation. Yeah. Yeah. Okay. So it's 10:30, and we start with the session now. Yes, sir. Please. Good morning, everyone. Our distinguished panelist, Dr. Shravan Singh, he is a senior scientist with Indian Agricultural Research Institute. Mr. Alex Giles, he is the commercial director, Liberty Produce from the partner country, United Kingdom. Thanks, Alex, for joining. We have Mr. Rahul Mahajan from Durga Seeds, well-known in Chandigarh for the last 40 years. We have Deepti Jahangani, founder, Edible Gardens. We have Mr. Om Prakash Manoli, he is the consultant, National Ayush Mission Punjab. And we have Pravel Gill, owner of Hansali Organic Farm. And I also welcome Manish Gupta, Vice Chairman, CII Chandigarh, and proprietor of Synergy Enterprises, all the participants, ladies and gentlemen. It's my privilege and honor to welcome all of you on behalf of CII and on my personal behalf to the India International Food and Agri Week 2020. This session is on urban agriculture and food security for the nations. Friends, urbanization is one of the key drivers of change in the world today. Like majority of the industrialized countries, India is experiencing a migration of population
from rural and agrarian-based to urban and non-agricultural cities. The world urban population will almost double from the current 7.8 billion to more than 9.5 billion in the next 30 years. It's a challenge not only for the urban areas but also for rural areas. Thus, there is a need for discussions on food, agriculture, and cities, especially in the context of the rural-urban linkage. Now, urban agriculture refers to the production of both food and non-food products in the urban and the peri-urban areas. The growth of urban agriculture is a result of global increase in migration from rural to the urban areas. Our current agricultural practices are unsustainable and will not be able to feed the world population as it grows in the times to come. The rise of extreme weather events, the climate change, this will also have an increasingly negative effect on the food production. It is clear that the global food production is facing a tangible and a threat, and we all need to respond urgently to find a solution that will prevent major crises in the years to come. According to the Food and Agriculture Organization, by 2050, the food demand is going to almost double. This is going to put tremendous pressure on already scarce land and water resources, implying an urgent need for an alternative way to combat food shortage. Urban agriculture, although not a panacea for food insecurity, has the potential to provide millions with some secured access to food. The advances in soil management, accurate weather forecasts, newer varieties of vegetables and pulses, better mechanization, application of AI in the field is all bringing a paradigm shift in this field. In today's session, we will focus on segments like organic agriculture, microgreens, medicinal and herbal plants, vertical gardening, and kitchen gardens, etc. We have a distinguished speakers from this field across the globe who will enlighten us on this subject today. We have a little tight session and it gives about 12 to 13 minutes to each speaker. My request to all the speakers to please restrict to 12 minutes and try to wrap up your presentation in 12 minutes sharp so that we have little time for a few questions which are there. So with this, we start the session and I would like to invite Dr. Shravan Singh, Senior Scientist, Division of Vegetables and Science, Indian Agriculture Research Institute for his insight on the concept of urban agriculture and organic farming. Over to you, Dr. Shravan, please. Yeah, just Dr. Singh, from CII. Since there are some farmers also who have joined, so if your talk can be in bilingual, Hindi and English mix, for the benefit of everyone. Thank you. Yeah, please allow me to share my slides. So, good morning all, particularly the organizers, Dr. Gravel sir, and Dr. Gautam, Ashud, and all the panelists on this particular very important session, which is not, of course, at the present, it is having that much of scope like what we have in commercial farming out of the in the rural areas or in the main commercial areas, but it is coming up very well in India in different metro cities and that. So my talk is particularly on intensive vegetable gardening systems in urban areas for achieving health and nutrition. You know that in urban areas, people right from that very poor to very rich are there. So all across this population, we have all the problems of malnutrition and particularly micronutrient malnutrition, like in rural areas we have. So it is very difficult to tackle that kind of problems using the foods which presently are more prevalent in cities or urban areas, particularly fast foods and all that.
So the best way is to have some kind of foods which are very rich in this particularly micronutrient minerals and all that. My presentation will be on that one and how to go ahead with that one. You consider as the chairman of the session has told that the population will be definitely going to be increasing in the coming years, and you can say that at present around 54% of the world population live in urban cities. If we talk about India, it is around 31%. So there will be massive demand of food supply, and particularly fresh fruits and vegetables. You know that freshness of the fruits and vegetables that attracts the consumers, and most of the good sites where these kind of safe fruit and vegetables are produced, they are far away from the urban areas, and their transportation and all that deteriorates their quality. So when that reaches to the houses, then it either lose its quality, particularly antioxidants and all that. So how to maintain that kind of things? The best way is to grow inside your house or in the vicinity of that one. And this is the main important point here. So rapid decrease in the green space and increase in heat islands. In addition to that one production of the food, there is other ways also, because you know that most of the cities are now having different heat islands. So how to manage that kind of things without greens, without green plants and all that? Although that municipalities and that different agencies are working on that part, but if we are adding some value from our own side, like our houses, then definitely we will be contributing to the urban health. That micronutrient deficiencies are common in urban areas, as I was telling that for this all these kind of problems, particularly heat islands, particularly that micronutrient deficiencies and the food supply also. So these kind of problems can be tackled by the urban agriculture. This is FAO is also supporting this one in different parts of the world, and though they have very specific definition, but I made it very general so that it is a guide within an urban setting in different convenient and attractive formats, such as rooftop gardening, vertical gardening, irrigation gardenings in available spaces in and around the buildings. So this is the thing which we will be going to have in our coming decades or years in our country also. So how it is contributing in that food system, you know that there are four pillars. They right from the availability, access, food utilization, and food stability. You know that all these four, if we are producing at our house or our in our vicinity, definitely all these four pillars will be taken into account, because availability, you know that when we are producing in our vicinity, we are going to consume it. Access means at any point of time, in day, night, at any point of you want to wish to have some chili or some kind of fruit or vegetables from that your garden, you can go and collect it. Stability, because you are maintaining it right across the year and all that. So it will be most important thing is the utilization. If you are having more and more fruit and vegetables in your diet, definitely they will be rich in that micronutrients and antioxidants, but they also help in utilization of micronutrients from other foods also. So that is the good thing about that one. So we can see the good example from the Brazil, that they have promoted the family gardens or family farms, and through that they could make good dent in their reducing the hunger. And now also in India, because government is putting a lot of that efforts to ensure the this proper nutrition to the children through midday meal and all that, and now the school gardens are very important. So in urban areas also these kind of things is required. You can see that there are deficiency of the minerals. There are most of the minerals we have very huge number of the population is a deficit in the one or elements, and there are four different approaches. You know, the supplementation, fortification, biofortification, and but dietary diversification is very common, very easy. It is a sustainable approach. And the what we are going to add, because when we go to market, we can buy one or two vegetables, maximum three vegetables. But when we grow inside our houses in pots, containers, and all that, we are having more number of vegetables. So our diet, our that food basket will be more diverse. So that will be adding to that different kind of minerals. Because we need a lot of minerals, particularly vitamins, micronutrients, all that, and these crops are very rich in that one. Fruit and vegetables, I will stress on the last point, that increasing intake of fruit vegetables will definitely increase that out-of-pocket expenditure and non-communicable diseases, either it is cardiovascular diseases or it is a heart, and that is cancer-related diseases as a household level, and definitely it will be adding up to the country, because this is a small contribution from each household. So they will be not reflected in a bigger. When we accumulate them, then definitely they are contributing to our national GDP. So we have discussed that these
vegetables are rich in minerals, antioxidants, protective foods, which are the new that people in the our session. So I want to make them that the dietary that allows for intake for Indian population is 300 grams. So in that one, we need to have 200 gram other vegetables, like you can say that fruit vegetables or some kind of curd vegetables or some kind of and that stem vegetables and all that. Root and tubers is around 50 grams and green leafy vegetables is 50 gram. And for those the pregnant woman, we need around 100 gram additional green leafy vegetables. So this is a composition. If you are, we cannot make this kind of balanced composition from the market. If you are having in our house, definitely this can be made. So although India is producing enough, now we are producing around 184.4 million tons, but our consumption and availability is also high, but consumption is around 173 grams, or that is in urban areas, and 99 grams in rural areas. So it means urban areas also having deficit in vegetable consumption. The another very important point which is related to the household that production or vertical gardening, or you can say that kitchen gardening and all that, is the safe production. And safe does not mean only free from the pesticides, but that also means that your food, your vegetables should be free from heavy metals. That should be free from microbial loads. If you are producing in your house or your kitchen gardens, definitely this kind of issues you are taking very carefully, so that your children and your that people can enjoy it very nicely. So another thing is that if you are producing vegetables, all that in vertical gardenings or in rooftop and all that, that definitely save energy up to 25%. These kind of studies are there. So and the senior citizens and children, we engage them, so that also help that their good health also, and their involvement in the day-to-day activities also. These are different vegetables. I have just listed that this content, and this is the idea. So most of the requirements can be made from the vegetable. These are the supporting studies actually. I just put that this is not that blank that whatever vegetables we are producing, they are not contributing. They are nutritionally, they are also contributing in our diet, particularly the people who are really in a need. Okay. So now coming to different specialized gardening, you know, the vertical gardening, rooftop gardening, kitchen gardening, there are different words actually. So their main purpose, their main aim is to produce more of vegetables, nutritious vegetables from small area. So this is their main aim, and you can see that either in rooftop, vertical gardening, different kind of systems are there. So, but there are some principles like that right crop should be grown at right place, then perfect access to the from the door. Suppose if someone is there in the this you can say that flat system or multiple that terrace in that floors, so it is difficult for him to go upside downside. So your neighbor may not prefer that kind of activity. So that kind of access point that to the gardens, to every point, that should be taken into care. My point is that permission for gardening and all this should be taken, so there is no problem on that one. Staggered planting, I mean to say that if you are planning for this kind of gardens, so you have to follow the staggered planting, means one planting and today and one another planting after 10-15 days, so that you will be having a continuous supply. So light source, because in cities we find that we or our neighbor may be having higher buildings, so that may set your that area. So either you provide artificial light or you arrange your pots accordingly. So that another very important thing is that we have constructed structures based on our requirement, but when we are putting more load of the pots and all that, they need a different kind of density of strength of the buildings. So that kind of permission has to be taken, or you take care of that kind of things also. I will be giving some examples also. Because aim is to produce safe vegetables, so it is necessary to ensure that minimum use of chemicals and more use of the organic fertilizers and all that. If we, as I was talking, proper permission and all that, if we take a rooftop of around 50 into 30 feet size, it accommodates around 100 to 150 pots, and that will be adding 1 to 1.5 tons of weight on the roof. So we have to take care of this particular consideration. So for that, we have different purposes. In the red, I made some suggestions like weight we can reduce by using the SDP or LDP bags or plastic pipes, or on that local materials like plastic. And water, no doubt, very serious issue, because in our during the summer seasons and all that, the quality water is a limitation. So we can use from our RO, we can harvest from the rainwater, and we can use the drip irrigation system or some mulching materials, because these kind of things save water. Because 1 liter water per pot is required, so around 200 to 300 liters per day is required. So we have to manage that water, and we
we cannot put pressure on the government for that one. We can say, oh, whatever we are using domestic water, we can pure it and we can use it. So light, as we can provide artificial light or erect some shade nets if it is a high, the summers is there. Heat, no doubt in cities that heat is a problem for most of the vegetables because they need a particular temperature, and going beyond that one, that is creates problem. So wind, sometimes on the rooftop, there may be a problem of the winds and sometimes of the animals also. So we have to take care of that one. We have a lot of vegetables which can be grown across the seasons and months. So these are the from the, because I am from IRI New Delhi, so we have lot of crops and varieties which are coming very fast. So I have listed here. So whenever when we will be going to discuss, anybody can they can contact us. I will be just showing here. So in most of the vegetables which are there. So besides that, I wish to mention that we need different kind of vegetables in different seasons, off seasons also. So we have like radish, cauliflower, carrot, onion, tomato. We have varieties in that one also, which can be grown in that one. Important thing is the crop management practices. Many people get failed because of they don't know how to manage the crops. So best thing is that take the criteria while selecting the site and the crop. Then potting media, very common, that sand soil and compost, or you can use coco-peat compost or vermicompost. Nutrient management, mostly prefer the organic sources. Water management, as I was telling, around 150 to 200 liters is required per day. So best use is that use your own water. Don't put pressure on the supply agencies. So whatever waste water is there from the kitchen and all that, put it for purification and then use that one. And then training and weeding, all that kind of structures is required for particularly vine vegetables. As I was putting thing that less use of chemicals, but you know that the disease and pest, wherever plants is going, that disease and that insects will be coming there also. So we have to use that organic kind of support systems like pheromone traps or some sticky traps and all that one, or the neem based pesticides, we can use it. Or sometimes soap water is also particularly for mealybugs actually. So growing vegetables, you can say either we can arrange the pots in like this one, or we can have some kind of traces of the different cabinets and all that. This is Sikkim style. When I was visiting Sikkim for their observing their vertical gardens and all that, I could find that this is very beautiful structure. We can make in a small space and we can grow more number of vegetables. How the waste plastic bottles from the concrete pots to the clay pots, these kind of structures we can use. But on rooftop, we need this kind of low weight, because that pot it should have less weight so that we can accommodate more number of plants. So this is there like different colors. We can harvest around sufficient quantity of vegetables which can sustain our that family need. And take different vegetables like even for cauliflower, lump cabbage, and all this we can take. And that grafted vegetables also very because we need only few plants, so we can grow this kind of crops because we can take for a longer period. And this kind of particularly green leafy vegetables, we have to take more and more. If you have some bigger space, you can put your pots like this, and this will definitely add value to the your building also. And these are different leafy vegetables which are rich in dietary elements, minerals, vitamins, and all that. They are common particularly in winter season and the summer season also. These are varieties from Pusa Institute. So if anybody is interested, we have that seed kits also. We are supplying every year. And if somebody is South India, there is also there. These are different root vegetables. You can say they add definitely value to the garden also and to the plate also. These are different exotic vegetables because we can manage in small areas. We can grow this one. Important that when we are growing this one, we got a lot of calls that in case of bottle guard, this kind of problem. So I want to mention that although it is that take seeds from the certified source, one very important point that every pot should have some kind of hole, because whenever excess water is there, that otherwise damage your plants. So ensure proper watering, particularly, and use vermiwash or vermicompost for better growth. Transplant in evening hours, ensure pollination, particularly in cross-pollinated crop. This is a case of bottle gourd I'm just putting. This is female flower, this is male flower. So in around 8 to 11 o'clock, around that one, you have to take pollens from this one and put it in this one. So that will ensure that pollination. There are so many constraints also there, because when we are putting this one, it is not easy to go at a large scale. We need some kind of support system, particularly the kits, ready to use kits, seed, manure, fertilizers, plant protection kits, and all that.
then it is some families, when we are interacting on these kind of issues, then they say that it is remains a compulsion to stay at home to take care of the plants. If you go for 7 8 days, they either they go die or something like that, and there is damage of insect pest or animals, and because of this kind of sometimes theft also is there. So this kind of problems also comes. Another very important issue is coming is that air pollution and deposition of heavy metals. That is more prevalent in the soils in peri-urban areas, but we can see this kind of problems there. Also, these are different kits from the PUSA, from IHR for South India, and in fact, that AVRDC is also supplying in some parts. So thank you for giving me opportunity, and I will be definitely ready to have some response on the points. Thank you. Thank you so much, Shovanji, for excellent presentation, starting from the nutrient values on to the different type of the techniques and how one can do it at home. In a very short time, you have been able to touch up all the points. Anyone would like to ask any question on this? But it was quite motivating task, and it makes one feel that, oh yes, this can be done at my home. And that's an important message, that even if you have a small flat apartment, you can use your balcony to at least grow some of the vegetables or herbs which can be used at your home. Any questions, anyone? Or so thank you, Shravanji. With this, we move on to our next speakers, and I'll invite Mr. Alec Giles. He's the commercial director from Liberty Produce. He was formerly CEO of Shepherd Media. He brings a wealth of commercial expertise to his session, and we are looking forward to him to share his vision on his fascinating venture. Welcome, Mr. Alex. Over to you. Well, thank you. Good afternoon, good morning, everybody. It's a great honour to be here, to be asked to speak, and to be a representative of the UK, your partner company, partner country, at this event. So thank you very much. Do you have my presentation? Will you be able to share that, or shall I? How should we work that? Thank you so much. So, as I say, good morning, everybody. I am with Liberty Produce. We are based here in the United Kingdom. We have a facility in London, and we have a facility in Scotland, in Dundee. And we were funded just under 2 years ago by the British government to build a centre of excellence in the UK for vertical farming. And for those of you perhaps not familiar with the concept of vertical farming, in essence, what we're talking about is producing crops at the moment, primarily leafy greens, herbs, and salad plants in an entirely controlled environment. So an entirely internal environment that has complete control of the lighting, of the temperature, of the nutrition that goes into the plant. And essentially, what that gives you is the ability to have a great deal of control over the quality of the plant, the safety, so it's free from disease, and brings potentially a great deal of benefits. However, I will say right from the very beginning, there are an enormous amount of challenges. This is a very early industry. Really, the type of work that you'll see in a moment, a couple of the pictures we have, has really only been going really for less than a decade. I would say that there has been what you might call proper controlled agriculture, vertical farms. May I have the next slide, please? Thank you. So there is a picture of the inside of the system that we have. So you'll note that it has an LED lighting system. You can see you have the plants in racks there. Those are small lettuce plants that you can see growing in there, and you can see that there's a hydroponic system. That picture illustrates really actually all the different ways, in fact, that you can do your hydroponics. From at the bottom, you'll see the water and the plants are actually floating on that. That's a raft system.
And then in the middle, you'll see they're in little pots. We call that an ebb and flow system. So the water is moving much more in that. And essentially, that water in that controlled environment is going through the plant bays, and then is going back into a filtration system, and then a nutrition system, which is adding the varying nutrients, and then it's going back in. That essentially means there's very, very little water loss in a system like that. Once you've filled the container with the amount of water that you need for the plants that you have, you'll experience only a very small amount of water loss through the operation of it. So it can be a very, very efficient system. Those lights that you see are what we call as full spectrum lights. So essentially, even though, of course, they look white in that picture, the total control means that you can change your light spectrum, your light recipe, if you will, throughout the growing cycle of those plants. So I know there are lots of farmers, lots of experts on this call, so you'll forgive me for telling you things that you absolutely know, but plants need essentially different things through their growing cycle, from very early when they are seeds all the way through to when you can start seeing those plants are quite young. They're a few centimeters tall, and so we change the spectrum of light, the red, the white, the green, as we go through. Next slide, please. And so, as I say, the system that we have in Scotland, where our physical facility is located, is actually primarily a research and development facility. So we are very much at the cutting edge of the technologies in these areas. So the system you see there is not the type of system that you would expect if you were going to move a system like this into New Delhi or to Bangalore or such like. It is designed to research all of the cutting edge technologies and decide on the most efficient ones. And the important thing to consider, the most important thing to consider, of course, is what is it that you're trying to grow. And once you decide what is the crop that you're trying to grow, then you build a system around that. It's very important that one size does not fit all solutions. Next slide, please, if I may. Thank you. So this is just an example, actually, some ideas perhaps of the type of things that vertical farms currently are very, very useful for. So we are doing a lot of work in soft fruit, in berries, in blueberry and strawberries in particular for customers. And essentially, what we're showing here is what we call a hybrid approach to vertical farming. What we mean by that is that we don't expect, if we were to come to India or to come to anywhere where there is very extensive infrastructure, whether it's glass houses, greenhouses, polytunnels, or just, of course, the open field solution. It is not practical for us to suggest for one moment that you would replace all of that wholesale with some massive tower, some massive building in which you're just going to move all of your growing into. It's clearly far too expensive, both in the capital expenditure of building such a facility and in its operation as well. But what we do think is very exciting, and particularly exciting for India, is this concept of a hybrid solution where we take a more modest-sized facility. It might be in a shipping container, and then with the lighting and the filtration system built into that, and then you take these very small plants like a blueberry, and you grow your early stage, so you have a much stronger plant, much more disease-resistant plant, and it's this plant that you then transpose, that you take into your polytunnel or into your greenhouse, or depending on what the crop is, out into open field. And if I could just go to the next slide, please. And to give you just one example about germination here on the blueberries, and this is work that we've done right now, in a glass house, in a greenhouse, a blueberry takes about 10 weeks or over that to get to germination. In a vertical farm,
you can do that in 21 days, in 3 weeks, and in a 40-foot shipping container, you could have about 20,000 plants growing in that, and then moving into a glass house. So if you are looking at a facility that is a soft fruit facility, and blueberries are a very high value crop in the commercial world, that potentially is very useful, very exciting opportunity. And the other benefit, of course, of a vertical farm is essentially once you have worked your lighting out and you've worked the hydration and the temperature that you need, that system just replicates itself. So every 3 weeks, you have 20,000 plants that have got to the stage of germination that are useful to you. You can move those 20,000 plants out. You can conduct a simple cleaning of the facility, and then start another 20,000 plants going, and you can move those through the system as you go. So you can have a very efficient system, and one where essentially you are replicating the best of what you need every time without interference. Next slide, please, if you would. Thank you. So there you go. The research implications for India, for example, and your research institutes, is to say that the vertical farming at the moment is very much seen as these facilities that can grow microgreens. It has, of course, been started, as a North American and European markets first of all, where there is a big market in hotels and restaurants for those types of things. But what we want to move vertical farming, and we think it's very exciting, is into this increased efficiency in propagation for fruiting crops, these speed breeding programs, so you can move quicker, have more harvests through the year. The incredible importance, it's been mentioned already by speakers here, of biodiversity, and this ability to grow a variety of crops in these sometimes very challenging environments that we find around the world. Just the next slide, please. So, if I may finish just with a couple of points. As I say, vertical farming absolutely should not be considered something that is going to replace those of you on this call that have extensive glasshouse facilities, polytunnel facilities, or open field situations, but it can enhance, I believe, those facilities. If you are an entrepreneur or on this call, yes, many people have done well by building what we call these sort of container farms in the urban environments, and then supplying high-end hotels with their crops. That is a way of starting a business and doing very well. It's worked in a number of cities around the world. It's worked here in London, where I'm sitting now. But I would suggest to you that there are so many exciting opportunities in high value crops, particularly for the pharmaceutical industry, where there is a growing interest and need for certain of their ingredients to be grown in these very controlled environments. And the cosmetics industry as well is another massive opportunity for entrepreneurs. I would say that essentially, if I tell you something, if anyone tells you something about vertical farming or the future of agricultural that sounds like science fiction, then it's probably not going to happen, or it's probably not going to happen for some time. But if anyone tells you that the farming environment that we have now will stay the same for the next 25, 50, 75 years, they are most certainly lying to you. They are most certainly wrong. I'm sure there is no country that understands the dangers of climate change more than India. I appreciate that you have been dramatically affected in all sorts of ways. So you're all very, very aware of the challenges and changes that we are facing as a planet, and that is not going to stop. And very finally, vertical farming, as I mentioned at the beginning, it is a very early stage industry. There have been a number of investments really just in this last year into vertical farming, but it is very, very early stage. There are many, many opportunities for entrepreneurs around the world
to get into this business. My final slide, please, if you will. Thank you so much, Alex. It was Thank you. really a peep into the science fiction, and I firmly believe that whatever human mind can think and imagine, it can translate into the reality also. You're so right, sir. Thank you for the time. And I have a question that when and do you think that it will become a viable commercial project? Although you gave a hint that the pharmaceutical, cosmetic industry and the high-end hotels will be able to make it sustainable, and especially you are able to reduce, so let's say from 12 weeks to 3 weeks, so you will be able to have more circulation and more production at the end of the year. So what do you think that will become a viable commercial project for anyone? I think that already there are crops and opportunities that are viable today. So as I mentioned, at the moment it comes to it's simple economics of what is the value of the crop that you are growing. And if it is a very high value crop, and there are lots of examples, saffron happens to be a very good example, hugely valuable crop, very potentially suitable for vertical farming. So that is something that economically you can do now. If you are talking about replacing salad, for example, there are certain niche micro versions where there is value there. But of course, a greenhouse at the moment is always going to be much more efficient. So I think that we are probably maybe a generation away from being able to compete with the glasshouse for things like that. And I would also say potentially that you might never actually realistically want to compete with that situation. But I would say that more and more crops and opportunities over these next 5 years and beyond will become viable in a vertical farm. There'll be many more opportunities. Thank you so much, Alex. My pleasure. That's very true what you are saying, that somewhere the cost and the return is going to intersect, and this will become a viable alternative or adjunct to whatever the existing systems is there. Thank you so much, Alex, again for joining us and for your presentation. Thank you. My pleasure. Now we move on to the next speaker, and we have Mr. Rahul Mahajan, who is Director of the Durgadas Hybrid Seed Private Limited. And I think everybody in Chandigarh knows the Durga Nursery, and they have been here for 42 years. And I request him to share his insight on microgreens. Over to Mr. Rahul, please. Namaskar. Good morning. और मेरा आज का जो सब्जेक्ट है ये अर्बन फॉरेस्ट, अर्बन गार्डनिंग और हम कहते हैं अर्बन गार्डन्स, ये आज की बहुत ज़रूरत है। इस ज़रूरत की वजह ये है क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, और हम लोग एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास चंडीगढ़, जो एक यंग सिटी है और एक अच्छे जंगल से एक सिटी बनी है। और इस सिटी में अब जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ रही है और हम लोग देख रहे हैं कि उस तरीके से अर्बन किचन गार्डन या विंडो गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग, चाहे वो वर्टिकल गार्डन है, इस सब की जरूरत है। और जैसे जैसे ये लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, सो पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स इट, लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और चंडीगढ़ में वी हैव अराउंड 150 schools doing eco kitchen gardening, which was started by late Dr. S.K. Sharma। और आज हमारे पास चंडीगढ़ में 150 से ऊपर स्कूल हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग हो रही है। और आज जैसे मेरे को माइक्रोग्रीन्स के बारे में बताया गया बोलने के लिए, तो माइक्रोग्रीन्स और लेटेस्ट जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, फ्रॉम स्मॉल स्पेस यू कैन ग्रो गुड फूड, और आप लोग जल्दी में उसको ग्रो कर सकते हैं। और माइक्रोग्रीन्स जो है वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये माइक्रोग्रीन्स कुछ नया नहीं है इंडिया में, क्योंकि हम लोग एजिस से हम लोग व्हीट ग्रास और बार्ले हम लोग यूज कर रहे हैं एज माइक्रोग्रीन्स। और आज अगर हम बात करें माइक्रोग्रीन्स की, तो छोटी स्पेस में हम लोग ग्रो कर सकते हैं, जैसे अल्फा है, ब्रोकली है, then various varieties of greens like lettuce, palak, spinach, then broccoli, kales। अब बात ये है कि जो लोग इसको ग्रो कर रहे हैं, कुछ हाई एंड कंज्यूमर्स हैं जो इसको ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इसको हर एक को यूज करना चाहिए।
Microgreens are good source of proteins and minerals, और it is very easy to grow microgreens. आप कोई भी छोटे स्पेस में इसको कोकोपीट के साथ इसको ग्रो करिए, सीड डालिए, सीड डालने के बाद हल्का सा वाटरिंग करिए। तो मेरा मकसद ये है कि चंडीगढ़ को हम जो देख रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट की तरफ से देख रहे हों, चाहे हम वर्टिकल गार्डन्स की तरफ से देख रहे हों, क्योंकि मुझे इतने साल हो गए इस काम में करते हुए यहाँ पे, तो लोगों को अडॉप्ट करने में बहुत इजी है कोई भी नया कंसेप्ट। सो दे हैव अडॉप्टेड माइक्रोग्रीन्स। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर रहे हैं। और अगर हम ये कहें कि माइक्रोग्रीन्स में हेल्थ वाइज इट इज़ वेरी गुड, उसको आप थोड़े समय में विद इन 10 to 12 डेज आप एक अच्छी क्रॉप ले सकते हैं। एंड हेल्थ वाइज ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड। अगर आप अल्फा यूज कर रहे हैं, अगर आपका टेस्ट स्पिनच में है, आपका टेस्ट अगर रेडिश में है, different varieties of radish can be used for microgreens. It have almost different taste. Color के लिए, if you want some good color, you can use beetroot, then red cabbage. ये सब microgreens में use हो सकता है। और बहुत ही छोटे स्पेस में आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं, और विद इन 10 to 15 days आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि CII के माध्यम से कि लोगों को मैं और अवेयर किया जाए चंडीगढ़ में स्पेशली और सराउंडिंग चंडीगढ़ for all these urban activities. That's all. Thank you. थैंक यू सो मच राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में हमें इसके बारे में बताया। और ये भी अच्छा लगा कि आप चंडीगढ़ के निवासियों को और प्रोत्साहन दे रहे हो कि वो इस तरफ और जाएं और हर रंग बिरंगी सब्जियां अपने टेबल पे लेके आए। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन प्लीज? So if there are no other questions, I'll now request Deepti Dhangiani. She is founder of Edible Greens. Or it's interesting, she started her career as a journalist and working with Times of India, Network, 18, UTV, to name a few. And during her journalism journey, she came across this field, and after doing some stories, now she is 100% into it, and she has started her own venture. So I'll request her to share her experience on the concept of kitchen gardening. Yeah, thank you for opening up the audio for me. Thank you, Grival sir, and thank you to everybody at CII for having me here. It is an honor and a privilege. I did start my career as a journalist, and that gave me an opportunity to explore so many stories, so many change makers. मैं अपने फार्मर भाइयों और बहनों के लिए थोड़ा हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगी। जो हमारा कॉन्सेप्ट है किचन गार्डनिंग और अर्बन फार्मिंग, ये आई थिंक सनराइज सेक्टर से बहुत जुड़ा है। दिस इज समथिंग न्यू, लाइक यू नो दैट माय पैनलिस्ट हैव आल्सो मेंशन्ड अर्लियर। ये बहुत ही नया सेक्टर है जिसमें हम पहले तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो रहे हैं उसे हम दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जब कोविड का जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च में, तब मुझे बहुत सारे जर्नलिस्टों ने कॉल किया और पूछा कि अच्छा, आप अभी मार्केट में बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? तो मैं सिर्फ उन्हें फोटो भेज देती थी कि देखो, आज मैंने इतने सारे टमाटर हार्वेस्ट किए, आज मैंने इतना हल्दी, एटलीस्ट 6-7 किलो हल्दी हार्वेस्ट किया और अपने बिल्डिंग में शेयर किया। और ऐसे बहुत सारे, जैसे मोरिंगा ड्रमस्टिक जिसे हम बोलते हैं, शेवगा, वो बहुत सारा शेयर किया अपने नेबर्स के साथ। तो तो वो दंग हो गए कि अरे, ऐसे सिटी में मेरे घर में एक बालकनी है जिस अबाउट 40 स्क्वायर फीट एरिया, एंड एक विंडो ग्रिल है।
तो विंडो ग्रिल में मैं करेला और ऐसे जो भी क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, वो उगाती हूँ। और जो बैल्कनी एरिया है उसमें मैं श्रब्स और हर्ब्स जैसे टमाटर हो, अलग अलग किस्म हर्ब्स हो, जैसे बेसिल हो, बहुत ही मेडिसिनल जो हर्ब होता है गिलोय वो, और ऐसे अलग अलग किस्म के सब्जी तरकारी और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैं उगा रही हूँ। तो वो दंग हो गए कि ऐसे कोई कैसे सिटी में, जैसे मुंबई की सिटी में कैसे कर सकता है। तो मैं उन्हें सिंपल सी चीजें बताती थी जो मैंने अपने टीचर्स से सीखे हैं। एक फार्म है हरियाणा, नॉट हरियाणा सॉरी, तेलंगाना में अरान्या फार्म्स। मेरी टीचर नरसना कोपुला वहाँ के रहने वाले हैं, और उन्होंने हमें बहुत ही आसानी से दिखाया कि हम कैसे एक वीरान से, प्लेन से, एरिड से लैंड को कैसे हरा भरा बना सकते हैं, कैसे फूड फॉरेस्ट बना सकते हैं वहाँ पे। तो मैंने उनसे सीखा था अबाउट से 10 साल पहले। और हमारे बॉम्बे में प्रीति पाटिल है, वो भी मेरी बहुत से प्यारी टीचर है। उन्होंने नेचुरो इको फार्मिंग से हमें बहुत सारा ज्ञान सिखाया है कि कैसे आप कुछ भी उगाओ, कोई भी झाड़ उगाओ, कोई भी पेड़ उगाओ, उसमें आप अगर कोई भी जैसे मिली हो, जैसे मिली बग्स हो, जैसे एफिड्स हो, ऐसे अगर अलग अलग किस्म के जो कीड़े होते हैं जो झाड़ को तंग करते हैं, पेड़ को तंग करते हैं, से टमाटर को खा जाते हैं, अगर आपको ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप अपने सॉइल में, आप अपने मिट्टी में जाके देखिए कि मिट्टी में क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है। मिट्टी में पोषण है, इनफ पोषण है, जैसे पीएच का आप चेक कर सकते हैं, पीएच लेवल क्या है। आप कंपोस्ट बना सकते हैं। हमारे ने हमें सिखाया है अमृत मिट्टी बनाना, जैसे जैसे गौमूत्र और काऊ डंग और काऊ यूरिन यूज करके कैसे हम मिट्टी को इतना पोषण दे सकते हैं कि हम एक ही झाड़ से इतना सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। तो मैंने ये सब सीखा है उनसे, जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर जो माइक्रोग्रीन्स का विषय है, माइक्रोग्रीन्स जैसे एलेक्स जी ने आपको बताया कि माइक्रोग्रीन्स, एलेक्स जी और आई एम सॉरी, आई थिंक राहुल महाजन जी ने बताया कि माइक्रोग्रीन्स तो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, और उन्हें हम डायरेक्टली या तो कोकोपीट में, जैसे उन्होंने बताया, उगा सकते हैं, बट ऑल्सो हम उसे अब हमारे जो मेन झाड़ है, मेन पेड़ है, उसके आसपास भी उगा के से 5 या 6 दिन में हार्वेस्ट कर सकते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक हुआ। फिर जो मैंने आपको बताया, मैंने उन जर्नलिस्टों, उन पत्रकारों को बताया था कि मैं अंजीर और चीकू, मोरिंगा, हमारे यहाँ पे एक बिमली नाम का एक पेड़ है जो राई आंवला के जैसे होता है, वो भी मैंने कुंडी में उगाया है। जैसे 20 इंच का जो कुंडी है मेरे घर में, उसी में बहुत ही अच्छे से उग रहा है वो झाड़। तो अगर आपके पास जगह की कमी है, तो आप या तो अपने पेड़, अपने जो सब्जी तरकारी आपको उगाना है, या आपके पास विंडो हो, या आपके पास छोटा सा बैल्कनी हो, पहला चीज जो आपको देखना है, जो हमें सिखाया गया है, कि आप सूरज की किरणें आप स्टडी कीजिए। आपके विंडो में या आपके बैल्कनी में कितना सूरज, कितना धूप आता है। अगर आपके पास से 3 या 4 घंटे के लिए धूप आ रहा हो, तो उसके लिए उसी में आप मिर्ची, अभी टमाटर का मौसम आ रहा है तो हमने टमाटर के बीज डाले हैं, तो मौसम के हिसाब से और सूरज की किरणों के हिसाब से आप अपने घर में या आपके ऑफिस में या आपके आंगनवाड़ी, स्कूल कंपाउंड में ऐसे सब्जी तरकारी उगा सकते हो। I am very interested in trying to manage my waste। जो हम फ्रूट और वेजिटेबल पील्स हम किचन से फेंक देते हैं, मेरा उस विषय में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे समझ में
क्या होता है कि हम दो प्रॉब्लम एक ही तीर से सॉल्व कर रहे हैं। दो प्रॉब्लम क्या है, एक तो वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, मतलब जो भी हमारा कचरा कूड़ा हम सिटी शहर वाले फेंक देते हैं बाहर, हम क्यों ना उसी को कंपोस्ट करके और उस कंपोस्ट को हम सब्जी तरकारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाना सीखें। एक तो ये विषय हुआ। दूसरा विषय, जैसे बहुत सारे स्पीकर्स ने बताया है कि जो फूड सिक्योरिटी फ्यूचर में हमारे जो बच्चों के लिए जो खाना रहेगा, हम से अप्रोक्सीमेटली चावल का विषय ले या कोई भी मिलेट्स का विषय ले, शायद हमारे पास हमारे पूर्वजों के पास से अबाउट एटलीस्ट 1000 और 1000 से भी ज्यादा किस्म के चावल होते हों। अब वो उसकी मात्रा, जैसे वैरायटी की चावल, जैसे कोलम राइस हम जानते हैं, और अलग अलग किस्म के राइस, ब्राउन कलर, रेड कलर, वाइट कलर, ऐसे बहुत ब्लैक कलर की भी राइस होते हैं। तो हमारे बच्चों को भी ऐसा वैरायटी देखना मिले, इसीलिए अर्बन फार्मिंग भी उसमें हमारी बहुत मदद कर सकता है। तो ये मैं बताना चाहूंगी। और लोगों को ऐसे ये भी सोचना चाहिए कि मिलेट्स, अभी मैंने हाल ही में 2-3 महीने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम सोचते हैं कि मिलेट्स और चावल और गेहूं है वो हम सिर्फ बड़े खेतों में उगा सकते हैं, बट मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मिलेट्स जो है कांग और अलग किस्म के जो पर्ल मिलेट, जवार, बाजरा ऐसे है, क्या हम वो भी कुंडी में पॉट्स में उगा सकते हैं। और एक्चुअली सक्सेसफुल हुआ वो एक्सपेरिमेंट। तो हम ये भी, मतलब जो धान है, जो मिलेट्स है, जो हमारे पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी हम अर्बन फार्मिंग में ट्राई कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने प्रीटी मच सब कुछ कवर कर लिया है। एक लास्ट चीज है, मेरी टीचर प्रीति हमेशा बोलती है, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो नेचुरल इको फार्मिंग में वैल्यू सिस्टम है, जो हम हमेशा कहते हैं कि केमिकल्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें। जब भी हमारे पेड़ में, पौधों में कोई किस्म का पेस्ट आता हो, जैसे पत्तों को देख करके जांच पड़ताल कर सकते हैं, जैसे रूट्स, मूल को देख करके जांच पड़ताल कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, वो हम हमारे मिट्टी में जाके देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और उसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। हम हमारे जो पत्ते हैं, जो शहर में पत्ते गिरते हैं झाड़ से, उसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, कोई झाड़ू वाला लेके पूरा स्वीप कर देता है और कूड़े में फेंक देता है। उसे हम ना फेंक के अगर उसे हम मल्चिंग में यूज करें, मल्चिंग मतलब जो हमारा मिट्टी है उसके ऊपर अगर हम पत्ते ऐसे उसके ऊपर लाइटली लेयर कर दे, और बहुत सारे लोग पत्तों को जलाते भी हैं, तो वो उसमें से प्रदूषण भी बहुत ज्यादा फैलते हैं। वो ना करके अगर हम हमारी मिट्टी में जाके देखें, तो मिट्टी में ही हमारा सबसे सीक्रेट्स ऑफ द सॉइल जो बोलते हैं, वो हमें पता चलेगा। तो with this point, I would like to thank everybody for having me on this session, and wishing everybody an amazing experience in this sunrise sector, that is urban farming, kitchen gardening and vertical farming. Thank you very much. दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बढ़िया शब्दों में बताया कि आप घर पे और छोटी जगह में कैसे करते हैं, और सबसे अच्छा लगा कि आपने मिट्टी की जो महत्वता है, उसकी जो टेस्टिंग आई है, उसको देखने के आपने इतना एम्फेसाइज किया, जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। हमेशा हम सिर्फ पौधे की तरफ ध्यान रखते हैं, मिट्टी की तरफ ध्यान इतना जाता ही नहीं। जिंदगी में ऐसा बहुत होता है कि जब भी कुछ काम करना चाहता है कोई, चाहे स्पोर्ट्स है या कोई काम है या हॉबी है, तो उसे पहली फीलिंग आती है कि मैं शायद ये ना कर सकूं। सो बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, उनके मन में है कि ये मैं नहीं कर सकता। आप इस बैरियर को तोड़ने के लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे? क्या कर सकते हैं लोग, या उनको कैसे सोचना चाहिए, और उनको ये करने के लिए एनकरेजमेंट या कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? एब्सोल्युटली सर, जो आपने बोला है वो
जो भी जिनको भी मैं सिखाती हूँ, दैट इज देयर फर्स्ट डाउट कि मैंने इतने झाड़ को मार दिया है, तो डू यू थिंक आई विल बी एबल टू ग्रो एडिबल प्लांट्स घर में? तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप थोड़े से प्लांट से स्टार्ट कीजिए। आप क्या हमारा हमारा टेंडेंसी क्या होता है कि जब हम इस एरिया में इंटरेस्टेड होते हैं, हम नर्सरी में जाके एटलीस्ट 15-20 झाड़ खरीद के फिर उसे हमारे घर में रख देते, क्योंकि वो इंटरेस्ट बहुत होता है। तो मैं क्या बोलती हूँ उनको कि आप पहले सीजन देखिए। जैसे मैंने बताया, हमारे महाराष्ट्र में अभी सीजन है टमाटर का, लौकी का, से बेसिल का, ऐसे। तो एक और बहुत ही खूबसूरत फूल है शंख पुष्पी, ब्लू कलर का होता है, अपराजिता भी नाम से बुलाते हैं लोगों को, और उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत है। तो मैं लोगों को बोलती हूँ, आप अपने जगह के हिसाब से और सूरज की किरणों के हिसाब से 2 या 3 झाड़ पेड़ों या जितना भी जगह है आपके पास, उससे स्टार्ट कीजिए। उसे अपने खाने में यूज कीजिए। जैसे मैं एक बहुत ही अच्छा शाम को या सुबह को चाय बनाती हूँ। जो ब्लू पीप फ्लावर है, अपराजिता, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा लेमन ग्रास और थोड़ा सा बेसिल, इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि आप सोचोगे कि इतने ही इंग्रेडिएंट से जो मैंने घर में उगाए हैं, उससे स्वाद कितना अच्छा होता है। तो आप ऐसे करेंगे, आपके खाने में आप जो भी उगाते हो वो इस्तेमाल करोगे, तब स्लोली 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 आपको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, और उससे आप अपना एक्सपीरियंस इंक्रीज कर सकते हो, और फिर सीजन के हिसाब से और भी नए नए पेड़ उगा सकते हो। दैट वुड बी माय एडवाइस टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच दीप्ति जी। एक और क्वेश्चन, क्या आप एनकरेज करेंगे कि जैसे पॉट्स में ग्रो कर रहे हैं तो उसमें लोगों को ड्रिप इरिगेशन की तरफ ज्यादा जाना चाहिए? एक तो आई थिंक मैंने ये पॉइंट मिस आउट किया, तो इट्स वेरी गुड दैट यू ब्रॉट इट अप। फ्लैट्स में स्पेशली और टेरेस में स्पेशली हमें वेट का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जो हम लाल मिट्टी या जो भी नर्सरी से मिट्टी खरीदते हैं, वो बहुत हैवी होता है, और अगर हम पानी डालते हैं उसके ऊपर से तो उसको और भी हैवी कर देता है, और जैसे वन ऑफ द स्पीकर्स मेंशन, उससे बिल्डिंग का फाउंडेशन भी अफेक्ट होता है। तो उसे आप नेचुरल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज कर सकते हो, या अपने DIY जो अपने आप से भी एक प्लास्टिक बॉटल लेके उसमें एक होल बना के सुतली का धागा होता है, उससे भी उसको कनेक्ट करके नेचुरली ड्रिप पानी हो सकता है। या अगर आपके पास बड़ा सा टेरेस हो, आप ड्रिप पाइप लगा सकते हो, तो इससे वेट भी कम हो जाता है, और आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसको भी कुछ नुकसान नहीं देता। एक प्रॉब्लम हमारे एटलीस्ट बॉम्बे में मैंने देखा है कि हमारे बिल्डिंग्स वेट के लिए नहीं बने हैं, स्टैग्नेंट वेट के लिए नहीं बने हैं। वो जैसे कोई हम टेरेस में सिर्फ शाम सनसेट देखने के लिए जाते हैं, तो वो फ्लोटिंग वेट बोलते हैं उसको, बट जो स्टैग्नेंट वेट है उसके लिए हमारे टेरेसेस बने नहीं है। तो हम और ऐसे बिल्डर हमें if they are listening to us, I would just request that we start making our infrastructure to support urban farming in such a way, such that the drip irrigation, the weight management and space allocation for all of these things can be taken into account. एक बहुत ही बढ़िया डेविड एटनबरा ने फोटो शेयर किया था एक ऑस्ट्रेलियन बिल्डिंग के बारे में। 30 स्टोरी का बिल्डिंग है, 30 माले का बिल्डिंग है, जिसमें हम देख सकते हैं कि सब डायरेक्शन से कोई तो झाड़ उगा रहा है, कोई तो पेड़ उगा रहा है, मतलब हरियाली ऑल साइड्स ऑफ द बिल्डिंग है। हाल ही में एटलीस्ट 2-3 दिन पहले। सो दैट इज सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल दैट वी कैन अप्लाई इन आवर urban spaces also. Thank you so much, Deepti ji. Thanks for sharing your experience with us. And now we move on to our next speaker, Mr. Om Prakash. He is a consultant with National Ayush Mission Punjab, and he'll be sharing with us his concepts on medicinal and herbal plants. Over to you, Om Prakash ji. नमस्कार, सत श्री अकाल हर एक श्रोतागण ਨੂੰ
ਤੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ। ਹਰਬਲ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇष महत्व है। रुखों या जड़ी बूटियां बारे कहा गया है, पेड़ों के हर अंश से संभव है उपचार, इनके नित्य उपयोग से होते दूर विकार। रुखों की विशेष महत्ता का या जड़ी बूटियां की विशेष महत्ता का वर्णन करदे एक होर तुक हाजिर है। इस दुनिया में दो ही छावां, एक ने रुख अते दूजियां मावां। हालांकि शहरी खेत्रों में जगह की घाट है, पर फिर भी ग्राउंड, रूफटॉप अते गमला सभ्याचार राही किचन हर्बल गार्डनां का निर्माण असी सारे कर सकते हाँ। नैशनल मैडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के प्रयत्नों नाल जागरूकता मुहिम अधीन स्कूलों, कालजां, यूनिवर्सिटियां अते होर विद्यक अदारियां विच 2002-2003 तो हर्बल गार्डनां का निर्माण किया जा रहा है। अज साडे कोल एक अजिही नौजवान पीढ़ी तैयार हो गई है जो कि घरां विच रोजमर्रा दीयां जरूरतां नूं पूरा करन लई हर्बल जड़ी बूटियां उगाउण दे शौकीन बन गए हैं। स्कूलों कालजां विच चंडीगढ़ के स्कूलों कालजां विच असी 2002-2003 तो इको क्लबां के माध्यम राही हर्बल गार्डनां का निर्माण करते आ रहे हैं। 2018 में जदों मैं विद्यक विभाग सिक्ख्या विभाग चंडीगढ़ तो सेवा मुक्ति लई, उस समय साडे चंडीगढ़ के ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कूलों में लगभग 100 तो वध स्कूलों कालजां में हर्बल गार्डन बन चुके सन। इस दे माध्यम राही असी साडा इको मकसद हुंदा सी कि बच्चों नूं हर्बल बूटियां प्रति रुचित करना। सो मैं जिदा पहला वर्णन कर चुका हाँ कि इस जागरूकता मुहिम अधीन साडे कोल एक इहो जिही नौजवान पीढ़ी शामिल हो चुकी है, बन गई है, जो कि जड़ी बूटियां ते हर्बल प्लांट्स उगाउण दे माहिर हन। असी शहरी खेत्रों में विशेष तौर पर जिहड़े हर्बल प्लांट्स शामिल कर सकते हाँ, उन्हां विच मुख्य तौर पर जिहड़े शामिल ने उन्हां विच स्टीविया नूं आम तौर पर असी कलमां राही जां फिर बीज तो तैयार कर सकते हाँ। जनवरी फरवरी विच नवे पौधे इन्हां तो बनते हैं। जिहड़ा ज़्यादा सक्सैसफुल रेट है वो कलमां के माध्यम राही असी स्टीविया नूं प्रमोट कर सकते हाँ। तो स्टीविया नूं जिहड़ा मुख्य रूप विच शुगर फ्री पौधा कहा जाता है, इस नूं मुख्य रूप विच असी हर्बल टी विच शामिल कर सकते हाँ। शक्कर रोगियों लई ये बड़ा लाहेबंद साबित हो सकता है। तो इसनूं असी पूरी सफलता नाल बड़े मान सम्मान नाल अपने जिहड़े साडे घर के किचन हर्बल गार्डन ने उहदे विच शामिल कर सकते हाँ। नंबर 2 ते प्राचीन समय तो साडियां मावां, साडियां भैणां, साडियां जिहड़ियां बच्चियां ने वो तुलसी वाल विशेष ध्यान दिंदियां आ रहीआं ने। तुलसी एक इहो जिहा प्लांट है, तुलसी नूं माता का दर्जा दिता गया है। तो एक इहो जिहा प्लांट है जिहड़ा साडियां मावां, भैणां, बेटियां नजले बुखार या खांसी के समय चाह के रूप में इस्तेमाल करदियां ने। मैं विशेष तौर पर एक चीज़ वर्णन कर देना चाहता हाँ इत्थे कि जिहड़े हर्बल प्लांट्स ने उन्हां दा इस्तेमाल सानूं जिहड़े साडे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने उन्हां दी सलाह नाल करना चाहिए है। साडा जिहड़ा मकसद है किदां पौधे उगाने ने, किदां उहदा अवेयरनैस है, वो साडा मेन मकसद है। पर फिर भी जिहड़े आम प्रचलित चीज़ां ने जिन्होंने असी घरां विच शामिल कर सकते हाँ, उन्हां दा ही वर्णन कर रहा मैं। तो तुलसी जिहड़ी है आम तौर पर मार्च अप्रैल जुलाई अगस्त विच जिहड़े इन्हां दी नवीं पौध है लाई जाती है। तो यह लगभग 3-4 कटाइयां दे दिंदी है। तो
ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਲਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਨ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ। ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁਦੀਨਾ ਹੈ। ਪੁਦੀਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਟਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਜਾਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧਨੀਆ ਹੈ। ਧਨੀਆ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਟਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਬਲ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਰਸਾਤੀ ਹਰਬਲ ਪੌਦਾ ਤਾਂਦਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂਦਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਹਰਬਲ ਪੌਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹਲਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਈ ਜੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਕਰਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਕਰਕਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਕਰਕਾਰਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਕਰਕਾਰਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਥਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੈ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਮਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਸਣ ਹੈ। ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਰਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ 5-7 ਗਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਗਿਲੋਏ ਹੈ। ਗਿਲੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡੇਂਗੂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲੋਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਿਲੋਏ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸੁਹੰਜਣਾ ਹੈ। ਸੁਹੰਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨ ਨੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨੇ, ਗਮਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਨ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਰਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 14 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੰਸਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜਰਨੀ ਫਰੋਮ ਫਿਲਿਪਸ ਲਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਓਪਨ ਫਾਰਮ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਪਵੈਲ ਗਿੱਲ। Good afternoon, everyone. I hope you all can hear me. And it's a privilege to be here on this forum, and I thank everybody for having us here. मेरे कोले कोई presentation ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ experience ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ share ਕਰ ਸਕਦਾ। So our journey into organic farming is not a very long journey. We started our farming in 2007. And we are just about more than 13 years old into the field of organic farming. And this concept is also kind of related to today's topic because we are also related to the city. Our customers are in the city. We are in close proximity to a city. But yes, our farming practices are slightly on a larger scale than what we would call in closed spaces as in urban farming or the concepts that have been explained here. But yes, I can give you an insight on farming in the peripheral areas of the city and how we can adopt different ways and means of providing quality food to people living in the city. So once we started in 2007, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ it was an interest of just a hobby of getting and providing quality food for our family. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੌਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ today this has become a full-fledged business interest for us. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ organic farming ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, we did not start it in one straight go. We started with 1 acre, and each year we would add 1 more acre into the ambit of natural farming. And slowly we developed the understanding about how natural farming is done, what practices are required, and so on. And with the passage of time, when we started with 1 acre and kept on adding 1 acre every year, we also developed our own set of customers in the city. And we had an idea about what crops to grow, how to grow them. Like all practices, we had our teething problems, but since our start was small, so we got over them pretty easily and with ease.
And also, I want to share that our farm is certified organic by Punjab Agro, and we also have a food safety certification, something that compliance-wise we picked up along the way, and today we are compliant. In addition to the fact ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ 14 ਦੇ 14 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ 5-4 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ that we were doing organic farming, we were confident, and then after about 4-5 years we took one step and the rest of the land that we had was converted into organic farming in one simple go. Then we also had an interest of growing the basket of products that we have to offer. For instance, Tanuj, natural farming, that you will see that a lot of people are generally concentrating on cereals like pulses or wheat or rice. So we also try to diversify and add more and more products. And we would add one feature every year in our farm. For instance, in 1 year we would add a multi-fruit orchard. The next year we got into vegetables. The next year we got into free-range poultry. The year after that we added the cows for dairy. The year after that we added another breed of cows called Sahiwal. The year after that we added a goat farm. And today ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ we are practicing many streams of agriculture simultaneously as many as possible, because the inputs of one are shared by the other. For instance, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ dairy ਹੈ, the dairy gives us the manure for the fields, and the fields give us the organic fodder for the dairy. So they are all interrelated practices, and it also gives us a wider basket of products for us to offer to our customers in the city. So with the passage of time, today we are practicing seasonal vegetables, we have seasonal fruits, we have a dairy with 2 kinds of cows, with A1 for Holstein and A2 for Sahiwal cows. We have a goat farm, we have free range poultry, and we also started ecotourism 2 years ago. As I said, that all of these different streams are interrelated and complementary to each other. For instance, in ecotourism, we felt that the local people who come and visit our farm to spend some time with nature would also, with the passage of time, become our customers, because seeing is believing. So once they would see the kind of agriculture we are practicing, the natural farming that we are doing, they would go back and ask us to send a sample of milk or maybe some other product. And slowly we develop them into our customers also. So we have in a way a very small model. 14 acres is not a very big land holding in Punjab, but within our means we have been able to make a small model for people to see that you can practice different streams of agriculture together. You can grow quality food. You can have access, if you have access to the city, you can go make your customers, in which social media also played a very big role. Today, we have been active on social media for the past 5-6 years now. And today we have about 17 to 18,000 people who follow us on social media. And whatever produce that we have, whatever products that are coming out of the farm are shared on social media, and people are interested in how we are growing. People would like to know the kind of products that we have, and all our selling is done online. So social media has helped us in a big way in marketing, in promoting our products. We have a small team, like any family in the city. We have a small family. We have 3 members in my family. It's myself, my wife, and my father. And we have our distinct roles as far as our farm is concerned. My father does the farming bit. My wife does the selling. I am the infrastructure and the social media guy. So all of us work. We don't have any fancy overhead, but we have a linear growth year and year after year, month after month. We have a decent growth, and we are very happy with the kind of response that we have had. And we would like to keep on adding more and more features to our farm, so that we have more to offer to the people in the city. And a lot of people from the city come and visit our farm to see how we are doing organic farming, to learn, and even to experience our products.
So this is our small journey. Would also like to share that we are one of the national finalists for the Dharti Mitra Award in 2017 during the World Organic Congress. And it's been a good journey. As a farmer, I'm sharing my perspective with everyone. So this is our story. Thank you so much, Mr. Gill, for a great thing coming from the heart. And it is great that you are deeply involved into the organic farming and on-site, on hands. Thank you so much for sharing your experience. Thank you. We have a question for Mr. Alex. Alex, are you there? And if you can unmute your mic. Yeah. The question is that can you throw light on hybrid model in Indian context? Yes, absolutely. Depending on the size of the existing facility that you have, I would suggest that you would take a containerized system, so a shipping container system. Those come, I'm sure many people here know, in 20-foot and 40-foot containers. They can be adapted to be quite effective in an austere environment. So they can be a lot of the power can come from solar power, for example. They can have power requirements run off diesel generators as well. So they can be essentially off grid as facilities. So you can imagine a container that is used to do your propagation of your crop through the first month or 4 to 6 weeks, depending on what the crop is. And then you would move those out into your polytunnels or your glass houses. And as I say, depending on the crop that you're having, within a single 40-foot container, which would broadly contain everything that you needed, you would be able to sustain 20,000 or so of your seedlings and move them to the point at which it was effective to put them into your polytunnels or your glass house. Depending on the crop, the percentage of improvement in yield or the hardiness, the ruggedness of those plants at that point is something that varies depending on the crop that you're talking about. Thank you so much. Thank you so much, Alex, and thanks for joining us. Any question? Any other question? We have few comments. We thank Deepti ji for putting the link. This is a very nice link. We also thank Shravan ji for giving in a few steps for what to do. And also एक और चीज ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ YouTube ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ YouTube ਖੋਲੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ to propose a vote of thanks and conclude this session. Thank you, Chairman. Good afternoon, ladies and gentlemen. और सारे किसान भाइयों को नमस्कार. On behalf of CII Chandigarh Council and on my personal behalf, I would like to extend our gratitude to each one of you for joining us at the India International Food and Agri Week 2020, a session on urban agriculture for food security of the nation. Friends, urban agriculture at first glance may appear to be a fairly simple topic. Scatter a few plots about the city and let residents start gardening. In reality, however, urban agriculture impacts a community in a variety of ways, from producing food security, environmental benefits, and even modifying a city's urban form. Similarly, in spite of seeming simplicity,
urban agriculture does not just happen. To foster the development and growth of urban agriculture, a city may have to consider implementing techniques that include zoning ordinances, comprehensive plans, and in some cases state legislation. To summarize for our Kisan Bhaiyon, it is a most efficient tool by utilizing the city waste for food cultivation and creating jobs. It creates diverse ecology जहाँ पर fruit trees, vegetable plantation और fishing coexist कर सकती है उसी same environment के अंदर। इससे हम एक बहुत अच्छा ecological sustainable environment sustain कर सकते हैं। अभी इंडिया में ये बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है। इसके लिए हम सरकार से चाहते हैं कि इसकी अवेयरनेस बहुत मात्रा में होनी चाहिए टू द ग्राउंड रियलिटी लेवल, और इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी सोशली ओरिएंटेड इंटरप्राइजेज हैं वो इसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करें और नॉलेज इंटेंसिव टेक्निक्स इस एरिया में इम्पार्ट करें। द गवर्नमेंट एट द सेम टाइम शुड फैसिलिटेट अर्बन एग्रीकल्चर थ्रू डिफरेंट वेरियस बॉडीज like municipalities, cooperative societies, etc. With these words, I would like to thank our distinguished speakers, especially Dr. Shravan Singh, for giving a scientific approach to the urban agriculture, Mr. Alexander for giving the future insight to urban agriculture, Mr. Rahul Mahajan giving urban agriculture with respect to the special the city beautiful perspective, और बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने समझाया कि हम अर्बन एग्रीकल्चर को इस सिटी के लिए कैसे यूटिलाइज करके एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट स्पेशल करूंगा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कि चंडीगढ़ सिटी के लिए अर्बन एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। ऑलरेडी चंडीगढ़ में किचन गार्डनिंग एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है, उसी को कमर्शियल फॉर्म में हम एक अर्बन एग्रीकल्चर के फॉर्म में दे सकते हैं। स्पेशल थैंक्स टू मिस दीप्ति, she had literally explained the urban agriculture with respect to metro cities and to make it self-sustainable and eco-friendly, especially when the space is a constraint. Thanks to Mr. Om Prakash, इन्होंने किसान दोस्तों के लिए practically urban agriculture को के perspective से varieties of plants को define किया. And thanks to Mr. Gill for sharing his practical scenario of urban agriculture and encouraging more to follow. I also like to thank all the participants and farmers who have joined us today. I hope all participants have been benefited by the insight and discussion. Thank you everyone. Jai Hind. Thank you everyone. Enjoy the day and thanks for being with us. Thank you so much.